Hello everyone, my name is Charu Seni and I am your forensic biology educator on Think Sakshir. In this video, we will continue the biological evidence part 3, that is blood stain pattern analysis. In the last video, that is part 2 of biological evidence, we studied what are blood stain pattern analysis and the examination of blood through presumptive tests and luminol test, which is a test for latent blood stain patterns. In this, we will discuss how we should analyze, like how we can analyze the blood stain patterns. So let's continue with the topic. So first of all, let's understand what are spatter stains. Spatter stains are blood stains that result from a external force which is applied on the blood source. Okay, and what is blood source? I told you this, it is the source from where blood is coming. As we can see in this image, this is the blood source. It is a type of arterial spatter because there is a cut in the artery that it has caused the spatter stains on the nearby surface. SWGSTAIN is the scientific working group on blood stain pattern analysis. It comprises of the experts from North America, Europe, New Zealand, Australia. So these experts, they study about blood stain patterns and they give the new techniques to analyze the blood stain pattern analysis. So it was created in March 2002 at a meeting held by FBI laboratory at the FBI Academy in Quantico, Virginia. Next are the factors that affect spatter stains. So what are the factors that can affect spatter stains and in what way? Spatter stains can be affected in two ways, that is shape and size. Like this, it is a circular shape. It has spikes. It has long spinal structure, and it is spreaded all over the surface. So like this, shape and size of spatter stains will vary, and what will be the factors affecting these shape and sizes of spatter stains? So first is velocity of droplets, direction of travel, and third is angle of impact. These all factors will also determine area of origin of blood shed. What is area of origin? From where the blood or the spatter stains were originated. Suppose these are the blood stains. Okay, this is a blood stain, and it came from this source. Then this will be the area of origin. Now let's discuss the first factor, that is velocity of blood droplets. So what is the velocity of blood droplets? From which speed the blood droplets are falling on the surface, on any kind of surface, whether it is wall or it is floor, that will be the velocity. So it says increasing the energy of the external force will reduce the surface tension, thus decreasing the size of the droplets. जब किसी एक्सटर्नल फोर्स को इंक्रीज किया जाएगा, उस पर ज़्यादा एनर्जी लगाई जाएगी, तो जो हमारी एक्सटर्नल फोर्स होगी वो किस पे लग रही है? ब्लड सोर्स पे. वो ज़्यादा फोर्स से अगर लगेगी तो जो ड्रॉपलेट्स होंगी वहाँ से निकलेंगी, ऊज आउट होंगी उस ब्लड सोर्स से, उनकी जो सरफेस टेंशन होगी वो रिड्यूस हो जाएगी. सो हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा कि सरफेस टेंशन इज द फैक्टर. सरफेस टेंशन एंड कोहेजन आर द टू फोर्सेस दैट कीप्स द ब्लड ड्रॉपलेट इन स्फेरिकल शेप. तो स्फेरिकल शेप में जो सरफेस टेंशन होती है वो क्या होती है? मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमारे ब्लड के सारे की सारी मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक तरह ऐसे बाइंड करके रखते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. ठीक है, तो वो अट्रैक्टनेस जो है वो अगर रिड्यूस हो जाएगी तो जो हमारी स्पैटर जो साइज है वो क्या होगा? वो कम होगा. जो ब्लड ड्रॉपलेट होगा वो डिवाइड हो जाएगा, तो जो साइज होगा वो कम होगा. सो इसलिए अगर किसी ब्लड सोर्स पे एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा लग रही है, ठीक है, एनर्जी ज़्यादा एनर्जी से लग रही है, तो जो ब्लड ड्रॉपलेट्स वहाँ से गिरेंगी, स्पैटर स्टेन्स जो वहाँ से बनेंगे किसी भी सरफेस पे या फिर वॉल पे, उनका जो ब्लड ड्रॉपलेट्स का साइज होगा ना वो डिक्रीज हो जाएगा. So this can be divided into three types, that is
लो वेलोसिटी, अगर उसकी वेलोसिटी लो होगी, ठीक है, लेस देन 1.5 मीटर पर सेकेंड, तो जो स्टेन्स का साइज होगा वो 4 mm से ज़्यादा होगा। मीन्स अगर मैं बहुत धीरे से मार रही हूँ तो जो ब्लड ऊज आउट होगा, ठीक है, स्पैटर स्टेन्स फॉर्म होंगे, उनका साइज ज़्यादा होगा, लाइक ग्रेटर देन 4 mm, एंड इट विल बी ड्रिपिंग ब्लड, क्योंकि वो ड्रिप वाइज गिरेगा, ड्रॉप वाइज। नेक्स्ट इज मीडियम वेलोसिटी। इफ द वेलोसिटी इज बिटवीन 2 मीटर पर सेकेंड टू लाइक 25 मीटर पर सेकेंड, दिस रेंज, then the blood droplets formed will be of size 1 to 4 mm, and it is seen in the cases of beatings and stabbings. Third is high velocity. If the velocity is greater, like more than 30 meter per second, then the blood droplets will be less than 1 mm. 1 mm is this much. If you know, we can say that yeah, this is 1 mm something. Then these minute droplets can be seen on the surface nearby where the spatter stains are formed. So the rule for the velocity of droplets is higher the force, higher the energy, higher the force, higher will be the velocity, and smaller will be the stains. And this how the velocity affects the size of the blood droplets. Next, this is the illustration. In this we can clearly see that in this low velocity was applied and blood droplets are bigger in size as compared with these droplets that are smaller in size. Next is the directionality of the stains. So what is the direction of the stains? कौन से डायरेक्शन में वो है, उससे हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? So अगर हमारे जो स्टेन्स हैं वो इलोंगेटेड है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ दिस इज अ फिंगर, सपोज इट इज अ फिंगर एंड ब्लड इज फॉलिंग फ्रॉम दिस लाइक दिस, ठीक है, it will be the 90 degree, this is the surface and it will be the 90 degree angle. What will be the droplet, what will be the shape of the droplet? It will be round, circular. But if I like, अगर मैं अपने हाथ को ऐसे झटकती हूँ, ठीक है, तो जो वो ड्रॉप होगी वो गिरेगी, एक एंगल से गिरेगी. सपोज दैट एंगल इज दिस, हेयर इज माई फिंगर, और यहाँ से जो ब्लड गिरा वो ऐसे गिरा, तो जो वो ब्लड गिरेगा वो इलोंगेटेड शेप में ऐसे आएगा और इसका डायरेक्शन होगा इस साइड, क्योंकि मैंने ऐसे किया है तो डायरेक्शन इस साइड होगा. तो इस डायरेक्शन से हमें क्या पता लगता है, लेट्स सी, जो हमारे इलोंगेटेड स्टेन्स होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि जो हमारा एंगल रहा है ब्लड गिरने का सरफेस पे, दैट इज बिटवीन 0 to 90 डिग्री. एंड सेकेंड इज जो हमारा ब्लड स्टेन है उसको हमने कैसे डिवाइड किया हुआ है, आप ये फिगर देखिए, ये हमारा एक इलोंगेटेड ब्लड, ये इस फिगर में ये हमारा एक इलोंगेटेड ब्लड स्टेन है जिसमें जो हमारा पेरेंट स्टेन है वो तो इतना पार्ट है, दिस इज आवर पेरेंट स्टेन. अब उस पेरेंट स्टेन से फोर्स की वजह से जो स्पाइन निकली है दैट इज दिस मच, एंड देन एक सैटेलाइट स्टेन फॉर्म हुआ है जिससे आगे अगर स्पाइन निकल रही है, तो ये इसका डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है कि वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल किया है. तो इससे वी कंक्लूड दैट इन विच डायरेक्शन द सैटेलाइट स्टेन विल बी देयर, द स्पाइन विल बी देयर, इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ स्पैटर स्टेन. दिस इज हाउ फ्रॉम द शेप ऑफ द स्पैटर स्टेन वी कैन टेल द डायरेक्शन ऑफ स्टेन. नेक्स्ट वी हैव एंगल ऑफ इम्पैक्ट. तो एंगल ऑफ इम्पैक्ट एज आई डिस्कस्ड कि अगर हमारा 90 डिग्री से फॉल हो रहा है कोई भी ब्लड ड्रॉपलेट तो वो राउंड होगा, बट अगर किसी भी स्पेसिफिक 90 डिग्री से कम एंगल पे फॉल हो रहा है तो वो इलोंगेटेड होगा, और जैसे ही एंगल कम होता रहेगा तो वो और भी इलोंगेटेड रहेगा. अब सपोज दिस इज़ अ वॉल, अगर मैं यहाँ पे ऐसे अपना फिंगर, मेरे फिंगर से ब्लड निकल रहा है, अगर मैं यहाँ से ऐसे थोड़ा सा गिराती हूँ तो वो यहाँ पे आके टच होगा और फिर वो ऐसे इलोंगेटेड बनेगा, क्योंकि उसका एंगल वो बहुत ही कम हो गया है, ठीक है. तो अगर
angle is between 0 to 90 degree. ठीक है, it is near to 90 degree, then circular stains are formed as like this, and if it is like near to 0 degrees, then elongated stains are formed, and this is the direction we can clearly see the जो satellite stain है वो इस direction में. तो this is the direction of travel of blood stain, and the angle can be calculated by this formula, that is sin alpha is equals to W by L, where alpha is the impact angle. That is, suppose this is the blood source, from here blood is falling, and this is the surface, this will be the angle, this is the direction of travel, and blood drop formed is in this shape. Okay, then this will be the angle, this angle is alpha, that is impact angle. Okay, and the width and length, this will be the length of the stain, and this will be the width of, if I take in this stain, this will be the width of the stain, and this will be the length of the stain. Like this we can calculate the alpha. So we studied all three factors, that is velocity, direction of travel, and angle of impact. From these three factors we can determine the area of origin. So area of origin जो होगा वो एक 3D पॉइंट होगा, एक 3D origin से, जहाँ से ब्लड सोर्स होगी, जहाँ से ब्लड हमारा गिर रहा है, so that will be 3D. So how we will calculate it? By using two methods. First is string method and second is tangent method. अब आप देखिए string method में क्या होता है आपका, ये जैसे मैंने आपको लास्ट में समझाया कि that this is the length and this is the width of the blood droplet, और ये हमारा जो अल्फा होगा कैसे कैलकुलेट करेंगे हम अपने फॉर्मूला से, साइन अल्फा इज इक्वल टू विड्थ अपॉन एल, इस फॉर्मूला से हम अपना अल्फ़ा कैलकुलेट कर लेंगे, और जो हमारा अल्फ़ा आएगा उस एंगल पे हम क्या करते हैं, सरफेस ये है, उस एंगल पे हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग अटैच करते हैं एडहेसिव टेप्स से. सो जो हमारी एडहेसिव टेप्स होती हैं उसकी हेल्प से हम स्ट्रिंग अटैच करते हैं, एज वी कैन सी इन दिस इमेज. हम स्ट्रिंग मेथड में क्या करते हैं, 20 इलोंगेटेड स्टेन्स ले लेते हैं कि इस एरिया में हमारे ये स्टेन्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 19 to 20 स्टेन्स ले लिए. अब उन स्टेन्स से क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, सपोज दे आर इन दिस डायरेक्शन, एज वी कैन सी दिस स्टेन, इट इज़ इन दिस डायरेक्शन, इट इज़ ऑल्सो रिटन हेयर. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका सरफेस हमें पता है, प्लेन जो हमारा सरफेस होगा, जिस सरफेस पे वो ब्लड ड्रॉपलेट है, उससे हम अल्फ़ा कैलकुलेट करेंगे विड्थ और लेंथ की हेल्प से. अल्फ़ा कैलकुलेट करने के बाद हम प्रोटेक्टर की हेल्प से उतने एंगल पे स्ट्रिंग अटैच करेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पे जो सरफेस हमारा होगा, सपोज़ यहाँ पे जैसे हमारा वॉल पे शो किया गया है, उस सरफेस से हम अटैच करेंगे एडहेसिव टेप के थ्रू, स्ट्रिंग अटैच करेंगे, और ऐसे ही सिमिलरली ऑल स्टेन्स की हम स्ट्रिंग्स अटैच कर लेंगे, और उससे हमें क्या पता चलेगा, एरिया ऑफ ऑरिजिन. These are the examples shown for your reference. Suppose these three stains are here. ठीक है, they calculated the alpha by width and length of the blood droplets and attached the strings like this on this surface, and this they found out that this is the area of origin. In this image also we can see that how blood droplets are being examined. नेक्स्ट वी हैव टेंजेंट मेथड. टेंजेंट मेथड में भी हमारी सिमिलर थिंग है कि जो हमारे ब्लड ड्रॉपलेट्स हैं हमारे पास, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ ऐसे डिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे, ऐसे हमने डिस्टेंस को पीछे की तरफ प्रोजेक्ट किया. ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज टू बैक प्रोजेक्ट लाइंस अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ स्टेन्स. और जब हम इन स्टेन्स को पीछे की तरफ ऐसे बैक प्रोजेक्ट करेंगे तो एक एरिया आएगा जहाँ पे ये कन्वर्ज होंगी, जहाँ पे ये एक दूसरे को कट करेंगी या फिर एक दूसरे को मिलेंगी. ठीक है, एक मीटिंग पॉइंट आएगा. ठीक है, तो उस एरिया ऑफ कन्वर्जेंस पे हम देखेंगे कि हाँ ये हमारा 2D स्पॉट है, क्योंकि मतलब कि जो हमारा ब्लड सोर्स होगा वो तो कहीं ऊपर हाइट से आएगा ना ऑब्वियसली, तो जो हमारे ये क्या है, एक 2D पॉइंट है. अब इस हाइट को कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, h इज इक्वल्स टू डी इंटू tan अल्फ़ा. अब d हमारा क्या है, ये डिस्टेंस जो हमने बैक प्रोजेक्ट किया है, जितना डिस्टेंस जहाँ पे आके वो कन्वर्ज हुई है वो, दैट इज़ हमारा d. जो
अल्फा है वो क्या है हमारा एंगल ऑफ इम्पैक्ट, जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया था एंगल ऑफ इम्पैक्ट विड्थ और लेंथ से, तो उसी तरह से हम यहाँ पे अल्फा कैलकुलेट करेंगे और उसको फिर tan अल्फा की वैल्यू में डालेंगे और हमारा हाइट आ जाएगा। तो हाइट से हमारा क्या आएगा 3D पॉइंट ऑफ एरिया ऑफ origin. This is how this tangent method is applied. First, we will back project lines from the stains. These are our stains. इनसे हम अपना बैक प्रोजेक्ट करेंगे लाइंस को और यहाँ से हम क्या करेंगे हाइट कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला से, दैट इज h is equals to d dot 10 alpha. This is how we calculate area of origin. So guys, this video is over here, and in next video we will study about the different types of bloodstain patterns. Thank you.